Good afternoon, everybody. I'm back again. I am going to introduce Dr. Sandeep Marwa, though he does not need any kind of introduction. But for me, it is a privilege to have him here on our talk series. Dr. Marwa, as you all know, is a well known international media person with 7 world records to his kitty. He is the founder of Noida Film City, Marwa Studio, and Asian Academy of Film and Television, one of the 10 best film schools of the world. Dr. Marwa is associated with large number of television programs, feature films, and training films. He is the producer of largest number of short films in the world. He has trained more than 19,000 media professionals hailing from 145 countries of the world. He is the recipient of large number of national and international awards. He has been heading more than 100 national and international media and social organizations. He has been titled as Global Cultural Minister. He is the president of International Chamber of Media and Entertainment Industry. He is now the chancellor of AAFT, University of Media and Arts, and has been appointed as the Chief Scouts of India. So let's welcome Dr. Sandeep Marwa. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? I'm fine, sir. How are you? Fantastic. Lovely. So, sir, let's begin. What made you form Noida Film City? Oh, acha. This question actually I've answered many times, but then if I go back in 1986, that was a time when I designed this film city, and I wanted to have the best of the film, television, and media business in north of India. It's not that I had nothing to do with Mumbai, Madras, or Calcutta, which were earlier 3 centers in India that time. But I had an idea that people who have actually attained big name in Mumbai film industry, most of them are actually from North India. So why talent is rushing from this city to that city just for a little work here and there? And so we created this film city, and I'm so happy that Noida Film City now is the fastest growing film city in the world. Right. If you permit me to give some statistics, now this definitely, it's all yours. This is a 100-acre complex, 75 acres outdoor, 25 acres indoor, and in 25 acres we have 16 studios. Out of 16 studios, around about 350 channels are being broadcast to 162 countries 24/7. There are about 17,000 media professionals who are working in 3 shifts of 8 hours each. And I think the cascading effect is roughly 100,000 people, they are earning their bread because of this film city now. And I'm happy that at least I could do something for the nation. Wow, that is great, sir. It is an amazing achievement for North of India. Thank you. What is the overall status of film, television, and entertainment industry in India? Oh, well, see, I think it's very important to know that the glamour business is the biggest business on this earth. When it comes to India, we are the 6th biggest industry, let's say media and entertainment industry, which it is called. And there are about 10 million people who are working in this industry. And last year, we have touched something like 2,35,000 crore rupees turnover. When I say media and entertainment industry, it's very important to understand it includes print, radio, television, cinema, new media. It includes music, then theme parks, events. This is all segments. They together make media and entertainment industry. So we are 6th biggest industry. It's a huge setup. We are a great contributor to the total GDP of India. When the whole country is growing at the rate of last year, I'm talking about 4.5%, media and entertainment industry actually was contributing up to the rate of 12% to total GDP.
And it's a huge industry, actually. When I say print, then imagine we have 40,000 newspapers in this country, around about 4,000 monthly magazine in all the 28 languages. When I talk about radio, we have around about 350 radio stations all over India. We have something like 950 channels today, probably the largest number of news channels in largest number of languages they are in India. When I talk about cinema, we are the largest film producing country in the world. We make something like 2,600 films in 28 different languages. There are about 11,000 theaters in this country. 1.5 crore people watch cinema every day. I mean, imagine the total population of Hungary is 1.5 crore. So the whole country sitting in theater. Imagine. And altogether, I think we sell something like 5 billion tickets, cinema tickets, every year. And when it comes to new media, I think we are the fastest growing graphics, animation, and internet-related and gaming setup. And this all together makes a very powerful media and entertainment industry. And let me add last line into it, that today, whatever industry you may be in, but you need something or other from media and entertainment industry. That is the importance of this industry. Yes, sir, because without any media intervention, we cannot even promote our business or anything. So that is really amazing. So what are the career opportunities in the film, television, media, and fashion industry also? Well, fashion makes a part B, but then when I talk about all these segments, I think there's a huge scope, because forget about this the attack of pandemic, which is right now all over the world, and we are also sufferers. And somewhere down the line, even this industry has suffered a lot. But I'm not talking about that right now. But when you talk about career, I think a huge scope, because, like, for example, when you make one feature film, you need something like 500 to 800 people directly or indirectly working for one project. Now, it all depends upon the size of the project also. And you need so many designations. It all starts with the producer, the co-producer, director, assistant directors, cinematographers, assistant cinematographers, camera persons, still photographers. You need then you need people in fashion. You need people in food and catering. You need people in hospitality and tourism. Because see, we simultaneously promote many other industries when we try to make one film. Yeah, because it involves everything. It involves tourism, it involves food, it involves hotels, everything is there. Then you need the production staff. You need production controllers. You need production managers, their assistants. You need people to handle every segment of filmmaking as an assistant. Then in post-production, then you need editors, you need animators, you need graphers, you need people in post-production. So all together, and then of course marketing part, and then the advertising and publicity part, and then the social media part. So one feature film takes many people together on this single ship. And so there's a huge scope for people, but mind you, people who are educated, people who are trained. This industry is very expensive. Every minute costs a lot of money, and nobody has got time to actually prepare you or guide you or tell you on the sets itself. So people expect that you should be fully trained, you should be at least educated, you should be passed out from a film school if you are joining any film or television setup. I think because whatever I'm talking for films, actually it applies to television also simultaneously. Because same departments, they work in television setup also, except that you need more technicians, and you are, most of the time, you're also studio based when I talk about television programs. When you talk about print, then you need editors, you need sub-editors, you need writers, you need
designers, you need cartoon makers, then you need probably the people who can sell paper. I mean, the marketing guys. So there is a series of jobs. I think I can discuss one portion at one time. I mean, like you can talk about print. Definitely, sir. We have ample of time. The entire country is under lockdown, and Sundays are free for everybody. And definitely, we can have it on every Sunday till we don't finish up with this topic. Lovely, lovely, lovely. Same in the same way. When you talk about radio, you need audio masters, you need radio jockeys, you need people who are technically fit to handle the radio station and the equipments, you need recordists. So there are a set of people what you needed for radio also. So film, radio, print, television, and when I talk about new media, then animation, graphers, people who can make animation and graphics, and then people who can handle social media. Now, easiest of all these is the one who can handle social media, which is easiest right now. But then rest of the things, you need a proper training, proper education. You have to spend some time in learning the industry, your role in the industry, and what exactly you should know when you are entering into any of the segments of this industry as a professional. Right, sir. So what are the courses, as you mentioned, art and television schools? I am very happy that you have a school known as Asian Academy of Film and Television. And like there are n number of courses going on there, because I have personally visited this academy. My niece is there, so like she's doing her fashions. Okay. And there are so many courses. Like, what is the criterion to get admission into these courses? Now, let me first answer your first question. When I say courses, then we have production, direction and TV journalism, editing and sound recording, camera and lighting techniques, acting and presentation, sound recording. Then we have a radio jockeying. Then we have a TV presenters. Then we have, there are series of courses. Now, these are short-term courses, and they are also called postgraduate diplomas for 1 year and diplomas for 1 year. Then we have degree courses, which are masters for 2 years and undergraduate for 3 years. So we have BA in cinema, BA in mass communication and journalism. Then we have fashion, as you said. So what we've done is we have divided the whole AAFT into different schools to make it a very specialized and personalized education and training. So we have a school of cinema, school of mass communication and journalism. Then we have a school of performing arts, school of skill development. We have a school of hospitality and tourism also. Then we have a school of fashion and then design and then interior design. Then we have a school of animation. We have a law school, and then we have a management school. Now, idea is because when you're growing up, when you're in 11th or 12th, you start making your idea, you start building up a love and interest for one particular job, for one industry. And I think it's very important today to know a lot more about the industry rather than just knowing a little bit about each and everything. So when I say BA in cinema, a 3-year course will give you something like 30 subjects in 3 years. And you know still photography, you know acting, you know about the cinematography, then you know about the direction, you know about the costumes, you know about the sets and properties, you know about, then in 3 years' time, you have become expert. You have learned all the tricks of the trade. And the best part in India is, what I always keep in mind while designing a course, that every course which must satisfy you as a filmmaker, let's say, and also they should be job-oriented courses. Exactly. So none of my student is sitting idle, because they'll learn a lot, and
they are bound to get one or other job the minute they are pass out from the institution. Right, sir. So tell us, as you've mentioned all the courses, and our topic is careers in film, television, media, and fashion industry. So let's take them one by one. Exactly. So, yeah. So let's start off with films. See, when you talk about films, the most important thing is that education is important. Gone are the days when भाई भतीजावाद चलता था और आदमी कहता था आ जाना देख लेंगे. Those days are over. Those days are gone. Today, even the father who is the producer of the film will ask his son to please go back into one of these film schools, learn well, and come back to me and join my company. Now, this is the attitude which is now prevailing in whole of the film industry. This is how it is. It has to be like this. Because the filmmaking is so expensive, even father cannot afford to train his son on the sets. So it all depends upon what is your interest. So the interest divides one, whether you want to be in front of the camera or you want to be at the back of the camera. If you want to be in front of the camera, that means the course of acting is available with you. If it's television, it becomes acting and presentation. So you are involved in anchoring, you are involved in presentation, you are reading news, you can be a news reader. So these are the different segments in television. And in cinema, if I talk about, then you are an actor. And it all depends. I think you're very tired, looks like. Yeah. No. It's not there. Actually, it has been very tiring since morning. Just aligning things and all. And writing the questionnaire is the biggest problem. You just have to run your horses here and there to find out. It should fit into the topic that you are talking about. Into the conversation, the question should fit in there. So if you want to be an actor, that wrong impression should be out from your mind कि I'm a born actor. ये गलत फहमी होती है बहुत सारे बच्चों को. मैं born actors. नहीं, और मैंने स्कूल में एक नाटक किया था इसलिए अब मैं फीचर फिल्मों में हीरो बन के निकलूंगा. ऐसा नहीं होता है. आपको जो है एक्टिंग इन रिलेशन टू सिनेमा सीखनी पड़ती है, क्योंकि एक स्टेज एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग में भी जमीन आसमान का फर्क होता है. जो इधर जो आपकी सारी एक्टिंग है वो कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान की जाती है, क्योंकि कैमरा ही आपकी ऑडियंस होता है. और फिर वहां पर लाइटों का ध्यान रखना है, आपको सेट्स एंड प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, आपको अपने को आर्टिस्ट का ध्यान रखना है, आप डायलॉग बोल रहे हैं, आपको एडिटिंग का ध्यान रखना है कि क्या एडिटिंग होगी लास्ट फिल्म खत्म होने के बाद, उस हिसाब से कैसे डायलॉग बोलने हैं, कहाँ तक मेरी मूवमेंट क्या रहेंगी. तो ये सारी चीजें एक एक्टिंग के कोर्स के अंदर सिखाई जाती हैं. और वो जब टेक्निकली फिट हो जाता है, और सबसे बड़ा एक्टिंग के कोर्स का जो मकसद होता है टू डेवलप द इमोशंस व्हाट यू आर कैरिंग. जिसने इस धरती के ऊपर मनुष्य का रूप लिया है वो एक्टर हो सकता है, क्योंकि जिसके पास भी इमोशंस हैं वो एक्टर बन सकता है. लेकिन अगर राइट इमोशंस राइट टाइम पे नहीं आई तो वो एक्टर फेल हो जाता है. तो एक्टिंग कोर्स का एक सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है कि राइट इमोशंस को राइट टाइम पे चंद सेकंड के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर कैसे कैमरे के आगे डालना है, वो सारे एक्टिंग कोर्स का एक बहुत बड़ा मजा होता है. वही आप सीखते हैं और उसके लिए ही स्टूडेंट को तैयार किया जाता है, और टेक्निकलिटी जो है पूरी फिल्म मेकिंग की वो उसे समझाई जाती है, ताकि वो एक अनजान आदमी बनकर सेट्स के ऊपर खड़े होकर बेवकूफ ना कहलाए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंड एवरीवन who's keen in getting into acting for television or for cinema. You need to learn the acting course. Very important. Now these acting courses are for 3 months, for 1 year, and for 3 years. It's very important. How serious you are about your career, how much you want to invest on you, how deeply you want to get into the industry, what kind of a name you want to create for your nameself. It all depends upon what kind of a course you are opting for. तो आपने 3 महीने का किया तो आपको 3 महीने का ही सिखा सकते हैं ना, उसमें 3 साल का तो नहीं सिखाया जा सकता. Exactly.
तो वो और बात है कि 3 महीने में भी कई बार बच्चा अच्छा सीख कर और बहुत कामयाब हो जाता है। वो उसकी लक भी फेवर करती है और उसके अंदर का जो जुनून है, जो पैशन है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये तो हो गया एक्टिंग की बात। फिर फिल्म के कोर्सेज आ जाइए जो बिहाइंड द कैमरा। तो बिहाइंड द That कैमरा is the कैमरा most से ही शूट important, करें। I guess. हाँ जी, That is also one of the most important aspects all behind the camera. Everything all depends on behind the camera. Niji, there are 20 more careers which are behind the camera, and the one starts right from the cameraman. अब कैमरा जो है, कैमरा सीखना बहुत जरूरी है, कैमरा की टेक्निक सीखना बड़ा जरूरी है। हाउ टू ऑपरेट कैमरा इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ कैमरा लर्निंग। एक लड़का आया, कहता था मैं तो कैमरा चला सकता हूँ। कैमरा चला सकता है, लेकिन अगर कैमरे के लेंस और कैमरे की लाइट और कैमरे से जो शॉट कंपोजिशन बन रही है, अगर वही बेकार है, तो कैमरा ऑपरेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो जो फिल्म स्कूल होता है, वो कैमरा मैन बनाता है, वो कैमरा ऑपरेटर नहीं। सिर्फ ऑपरेशन करना सिर्फ एक काम होता है। इसके साथ हाउ टू लुक इनटू द कैमरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब व्हाट यू लर्न इन अ फिल्म स्कूल। कि आपकी कंपोजिशन क्या बनी है, आपने कैसे पूरी चीज को सेट करके पूरे फ्रेम को तैयार किया है, वो जो है कैमरे का कोर्स आपको सिखाता है। ये कैमरे के कोर्स 3 महीने का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, 1 साल का भी है। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और कितना पैसा है और कितने सीरियस हैं आप पूरी इंडस्ट्री के लिए। वो सारी चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर जो कैमरामैन को एकदम कैमरामैन नहीं बनता, आपको कई बार असिस्टेंट बनना पड़ता है, धीरे धीरे काम सीखना पड़ता है, दूसरे कैमरामैन का स्टाइल को समझना पड़ता है, और फिर जाकर आप कहीं एक दिन जाकर एक सीनियर कैमरामैन बन जाते हैं। फिर इसी तरीके से डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्ट डिपेंड करता है, आपने एक 3 महीने का कोर्स किया और आपने मेरे खर्चे के ऊपर पहली फिल्म बना ली और वहां से आप डायरेक्टर तो बन गए, आपको डेजिग्नेशन तो मिल गई डायरेक्टर की, लेकिन क्या बाहर जाकर आप उतने काबिल हैं कि आप एक बड़ा प्रोजेक्ट ले सकते हैं? तो वो उसके लिए फिर समय चाहिए। तो 3 महीने का, 3 साल का, 1 साल का कोर्सेज हैं। उसको करते हुए, डायरेक्शन की सारे तौर और तरीके सीखते हुए, एक डायरेक्शन के कोर्स के अंदर आप थोड़ा सा कैमरा भी सीखते हैं, थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग भी सीखते हैं, थोड़ी सी एक्टिंग भी सीखते हैं, और आप उन तमाम तौर और तरीकों को सीख लेते हैं जिस तरीके से आप सारे टीम को संभालेंगे। यानी कि यू हैव टू बी गुड एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो। यू गॉट माय पॉइंट? तो इस तरीके से कोर्सेज, जितने कोर्सेज हैं, हर कोर्स के अंदर एक बहुत गहराई तक उतरना पड़ता है, और ये सारे कोर्सेज बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी होशियारी के साथ बार बार हम लोगों ने वी हैव ट्राइड टू करेक्ट देम, ऑल्टर देम, ऐड देम, सब्ट्रैक्ट देम, मेंड देम, एंड वी हैव created them as one of the finest courses in the world. Wow, that's really incredible. Sir, you will also agree that every child is born with a different and amazing set of skills. Correct. Right. And when we are talking to students who finish their 10+2 and they start hunting for courses, and somebody comes to your institution to take admission in the film industry courses, what are the parameters that, because it's not that anybody and everybody can come and take admission, they have to go through a certain test, right? What are the parameters that you judge the student on? See, basic knowledge of English and Hindi, which is very important. अगर आपका किसी, अगर एक भाषा के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है तो समझिए वो ज्यादा कामयाब हो जाएगा। लेकिन बेसिक इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि पहले तो सारा जो कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश में चलना है, तो ये 2 भाषाएं, तो इसमें से आपको कुछ तो आए कम से कम। जी। और उसके बाद दूसरी चीज है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है इंडस्ट्री के प्रति, आपकी लगन कितनी है, आपका जोश कितना है, कितना पैशन है आपको इस इंडस्ट्री में एंटर करने का, क्या आपके अंदर वो जुनून है,
अब अगर आप कम पढ़े हुए हैं, अगर आपके मार्क्स कम आए हुए हैं, लेकिन अगर आप में जुनून है, अगर वो अगर आग लगी हुई है कि मुझे जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, then you are the most eligible student for this industry. Right. क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग प्लेस, और शोहरत जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और आपको अपना नाम कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, पैसा कमाना आसान है, लेकिन नाम और इज्जत कमाने के लिए आपको बहुत पैशन की जरूरत होती है। आपको जान देनी है कि साहब मैं इस पूरा ये काम, स्टूडेंट आते हैं बड़े जोश के साथ, और अगर जब उन्हें पता चलता है कि भाई मंडे टू फ्राइडे और 10 to 4 हमें पढ़ाई करनी है, तो कहते साहब हमने तो सोचा था कि हफ्ते में 2 क्लासें हुआ करेंगी, ऐसे भी आते हैं। तो छट गया बच्चा अपने आप। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो मेहनत नहीं करना जानते, जो रेगुलर नहीं होना जानते, जो पंक्चुअल नहीं होना जानते। ऐसे लोगों की इस इंडस्ट्री में जरूरत नहीं है। This is one industry which requires a lot of punctuality, lot of sincerity, lot of dedication, and definitely passion to enter into this industry. Then you are eligible for this industry. आप इतिहास पढ़ के देखिए कि जितने लोगों ने इस इंडस्ट्री में नाम कमाया है और फिर उसके बाद पैसा कमाया है, वो वही लोग हैं जिन्होंने दिन रात एक कर दिया इस इंडस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स को अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना है कि मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूं और मैं जान लड़ाना चाहता हूं, तो उनका जरूर नाम होगा। आज हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने कामयाब हैं, चारों तरफ नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर। जी सर, व्हाट वुड यू से अभी आजकल ये जो जगह जगह मॉडल हंट और गेट अ करियर इन द फिल्म इंडस्ट्री, come and participate in this competition and we will send you here, we will send you there, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए 10 में से 1 तो ठीक हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने फिल्म के इस इतने बड़े नाम को कैश करने की भी कोशिश की है, and many times we found that they turn out to be bogus. Neither they have any contact in film industry, neither they have ever produced a film in the industry, neither they are trained or in film industry. So sometimes there are, I'm getting your point, there are times when people have tried to make fool out of the young enthusiastic people. That is what I'm saying, sir. I will not mention, but there is somebody whose son is, he's a young boy. He is excellent in acting. He wants him to pursue it further. There are people, who are fooling them कि हमें 10 लाख दो, हम ये करा देंगे, 12 लाख दो, हम ऐसे करा देंगे. Like this is all which is going on, नाम खराब करके लोग इस तरह से पैसे कमा रहे हैं. You will find all sort of people in every industry. Nobody can take guarantee and nobody can check them at every doorstep. The only thing is that someone who's trying to be there must check the credentials of the organizing body, organizing company. अगर उनकी रेपुटेशन है, उनके कॉन्टैक्ट सही हैं, उनमें कोई नामी गरामी आदमी है, तो समझिए कि कहीं ना कोई चीज कहीं कुछ पार लगाएगी। बट अगर वैसे ये लोग इकट्ठे होकर और फिल्मी ड्रामे और फोटो छाप कर ये सब करेंगे, तो आई डोंट बिलीव इन दैट। बिकॉज सी, मुझे 27 साल हो गए एजुकेशन में, 29 साल हो गए स्टूडियो में, और 35 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर। तो बल्कि सिंपल सी बात है कि वो एक पलक देखते ही पता चल जाता है कौन कितने पानी में है। और हम तो स्टूडेंट को देख के ये बता देते हैं कि भाई ये कामयाब होगा कि नहीं होगा। होनहार बिरवान के होत चीखने पात, भूत के जो पांव हैं वो पालने में नजर आने शुरू हो जाते हैं। क्लास के अंदर सामने समझ आनी शुरू हो जाती है कि ये बच्चे जो हैं ये तो नाम कमाएंगे ही कमाएंगे, रोटी तो सब खा लेंगे क्योंकि कोर्सेज इतने जबरदस्त डिजाइन किए हुए हैं, लेकिन नाम कमाना जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो देख के चले लोग, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस व्हाइल पेइंग मनी टू एनी टॉम डिक एंड हैरी। Sir, do you have any courses for children? Because these days there are so many children
who are really very talented and who really want to do something good. No, see, my theory says that your basic education should be till 12th first before you enter into any of these creative courses. 12वीं तक स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चे के संस्कार अच्छे बनाए, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी करे, हिंदी इंग्लिश में उसे ट्रेन करे, और फिर उसके बाद लेट स्टूडेंट ट्राई फॉर हिज ऑप्शन, फॉर हिज लाइकिंग इन कॉलेज. अब ये देखिए कि मैंने 27 साल पहले ये इंकलाब पैदा किया था देश में, क्योंकि जितने भी क्रिएटिव कोर्सेज थे फिल्म, टीवी, मीडिया के, ये मास्टर्स हुआ करते थे. इससे पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती थी, ABC. तो कोई बीकॉम कर रहा है, कोई BA पास कर रहा है, कोई साइको ऑनर्स कर रहा है, जस्ट टू गेट इनटू मास्टर्स फॉर सिनेमा और फॉर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म. लेकिन मैंने ये कोर्सेज रीडिजाइन किए, मैं सरकार से लड़ा, मैं हालातों से लड़ा, मैं मिनिस्ट्री से जाकर मैंने ये सब बहसबाजी की, और मैं सारे जो क्रिएटिव सिनेमा और मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज हैं इनको पोस्ट ग्रेजुएशन से ग्रेजुएशन लेवल पे लेके आया. और पहली दफा मैंने शुरू किया BA इन सिनेमा और BA इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म. उससे पहले ये सब मास्टर्स थे. तो उसकी वजह ये थी कि बच्चे के वो 3 साल खराब नहीं होने चाहिए कि वो BA पास कर रहा है या BCom ऑनर्स कर रहा है, अकाउंटेंट बन रहा है, और पर चाहता तो था वो फिल्म में आने के लिए या क्रिएटिव साइड में. तो वो 3 साल क्यों उसके बर्बाद किए जाएं? उसको 3 साल ही वो ट्रेनिंग दे दी जाए जिसके अंदर बच्चे का इंटरेस्ट है, वो ज्यादा कामयाब होगा अपने फील्ड के अंदर, क्योंकि उसके पास ज्यादा एजुकेशन और ज्यादा ट्रेनिंग पहुंच चुकी होगी. तो ये बड़ा अच्छा एक सिस्टम बना है. इससे पहले बच्चों का जो है स्कूल कॉलेज, स्कूल के अंदर जो चल रहा है वो ठीक होता है. हमने लोगों ने 2-3 दफा शुरू किया था छोटे बच्चों के साथ फिल्म, टीवी के कोर्सेज, बट दीज कोर्सेज आर वेरी एक्सपेंसिव. और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि पेरेंट्स एक छोटे बच्चे के लिए एक हैवी फीस नहीं दे पाते हैं. इतनी साइकोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि भाई 5,000, 7,000 ले लो, 8,000 ले लो. एक 15 दिन का कोर्स आपके बच्चे का 30,000, 35,000 रुपया कॉस्ट हमें कर रहा है, उसके लिए 5,000 कैसे ले ले एक इंस्टीट्यूशन. तो 2 दफा हम लोगों ने वॉलंटरी सर्विस करके ये कोर्सेज चला लिए. उसके बाद हमने कहा लेट इट बी द प्रोफेशनल, एंड वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट and most professional film and television film school in the world. So I'm very conscious about each and every class which is happening in the university and in AFT. Oh, that's amazing, sir. Sir, what would you suggest parents who are in the rat race of pushing their kids into media, like pushing their kids into fashion shows and dance competitions and this and that? Okay, dance competition to some extent is good because that involves physical activity. No, right? No, there's nothing like that. Sorry, let me correct you here. ये क्या, देखिए, बच्चे का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा उसके माँ बाप या उसका स्कूल का टीचर पहचान लेता है. जी. Because when you try to have co-curricular activities in school, teacher in just few minutes can make out which student is keen in which side of the creative arts. And same thing happens with the mother and father, because they can see एक घर में टेलीविजन के ऊपर नच बलिए प्रोग्राम आ रहा है और आपका छोटा बच्चा उसको 1-1 मिनट में कॉपी करके आइडेंटिकल डांस कर रहा है. तो इससे ज्यादा इंडिकेशन एक छोटा बच्चा आपको क्या दे सकता है जिसके पास it doesn't have much of the words to speak actually. So that's the time when parents should see to it that their children must and should get some kind of a side education, some side training, some little more prominence in school activities, so that part of personality development must come out. Sometimes I give my own example to my students that I was so busy in my school and college with all the activities possible. You can't even imagine. There was not even one single activity where I was, or I never used to take part. Always there. So that has made me a better person, a good human being, a better teacher, a better administrator, and a better speaker at the end of the day.
and you have to promote your kids not only in education but in all the activities possible which school is concerned about. And I'm sure, I'm telling you, that you're going to have a better student, you're going to have a better product at the end of the day. So never stop students to get involved into extracurricular activities. And there are times when students are less interested, then there is no harm if parents are pushing students or kids to get into some of the activities. It will give them what a pleasure you'll get. Trust me. Right, right. So, I have a question from Hyderabad. It says, what would you suggest if somebody had a set of real award-winning, true life inspirational stories? And this lady, she is from Hyderabad, and her name is Dr. Sophia Roy Chaudhary. Wonderful. She is a writer. She is basically a cosmic healer. And she was one of my finalists also for SEA's Global Women Achievers Award too. She won the title Cosmic Healer. The fact is that there is one very big department in film and television industry which is called writing department. Right. And today, if you believe me, if there is any requirement, major requirement, it is the requirement of new scripts, new writers, very big demand. If you are exclusive, if you are a wonderful writer, if you know the subject, if you can bring in something out of the box, then there is an ample space for you, because hundreds of programs are being made, hundreds of feature films are being made, and you need every day something new to show to the public. You just cannot repeat what you've already shown. एक सीरियल शुरू होता है, 52 एपिसोड्स हैं, 52 एपिसोड्स लिखने के लिए आपको बहुत कैलिबर चाहिए होता है. कई बार एक राइटर खुद थक जाता है 26 एपिसोड लिख के. वो कहते हैं मेरे को समझ ही नहीं आ रही कि मैं इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाऊं. तो कई बार 2-3 राइटर्स का पूल बनाना पड़ता है कि तुम बैठो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि इस कहानी को आगे कैसे ले जाना है. और आप देखिए कितने सीरियल आ रहे हैं, इतने चैनल हैं, इतने प्रोग्राम हैं. तो ये प्रोग्राम तभी तो शुरू होंगे जब हमारे पास उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट्स होंगी. तो ये अच्छी अगर स्क्रिप्ट्स लिखना कोई जानता है, मेरे ख्याल से एक बेसिक राइटिंग का कोर्स करके, क्योंकि राइटिंग फॉर सिनेमा इज एब्सोल्युटली डिफरेंट व्हाट यू राइट सिटिंग बैक होम. जी. और वो आपको एक छोटे कोर्स के अंदर आपको गाइड कर दिया जाएगा कि हाउ टू राइट फॉर अ सिनेमा और टेलीविजन, how to write for radio. There are 3 mediums, and probably same story you have to write in 3 different ways if you're writing for 3 different mediums. तो वो आप जब समझ लेंगे, उसके बाद आप एक बहुत बड़े राइटर बन सकते हैं, क्योंकि राइटर का बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है. और कई बार तो एक राइटर को एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए की प्राइज मिल जाती है. I have a question from a 15-year-old boy. He loves writing. He has written a story about one of his pet dogs. And he says, if I give my story, can somebody make a small short film on my dog? Can be made. Why not? Why not? अभी लॉकडाउन खुलने दीजिए, स्टूडियो खुलते हैं सब. तो I would love to let him send the story. Probably I'll ask one of my teams to make one short film. Why not? Right. Okay, sir. The next question is, not everybody is able to get a platform to showcase their talent and capabilities. How do you, like you've already mentioned, कि आप बंदे को देख के पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितना कैलिबर है, कितना कैपेबिलिटी है. बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. नहीं, मेहनत कहाँ कर रहे हैं? मेहनत in the right direction. That is what I want to know. Like, जब मेरे पास लोग आते हैं, how do we get to know people whom we can refer them to? Like, I know you personally, right? So I can direct some of them to you.
But what Fine. about others? Not everybody knows me and you. That's the reason that you have to get into a formal training of any of the disciplines you love or you want to be in. जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो एक बड़ा इंस्टीट्यूट जैसे एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन है, वो आपको चाहे 3 महीने का ही आप कोर्स कर रहे हो, तो 3 महीने के कोर्स के अंदर आप 100 कॉन्टैक्ट बनाकर बाहर निकलते हैं। सिर्फ आपने एजुकेशन ही नहीं ली, ट्रेनिंग ही नहीं ली, आपने प्रैक्टिकली नहीं किया, फिल्म में काम ही नहीं किया, बल्कि आप एक बंच ऑफ कॉन्टेक्ट्स लेके बाहर निकलते हैं और आपका काम इतना आसान हो जाता है, जो उतने कॉन्टेक्ट बनाने के लिए शायद आपको 3 या 4 साल या 5 साल लगते। तो एक फिल्म स्कूल के अंदर भर्ती होने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है। आए दिन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर्स, एडिटर्स, ऑल टॉप पर्सनालिटीज, एक्टर्स, दे ऑल कीप ऑन विजिटिंग टॉप। जो पढ़ा रहे हैं वो भी तो इंडस्ट्री के लोग हैं। फिर हमारी अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनियां हैं। जब हम देखते हैं कि बच्चा बहुत काबिल है, बहुत मेहनती है और ईमानदारी से काम करना जानता है, वो कई बार उसको पहली फिल्म हम दे देते हैं, वहीं से काम मिल जाता है। तो ये तो है कि आप घर बैठ के तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो आप समझ लीजिए। बाहर तो निकलना पड़ेगा, बाहर तो निकलना पड़ेगा। अगर और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, और मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो कह रहे जी मैं 20 साल से राइटिंग करता हूँ, मुझे टेलीविजन के लिए राइटिंग करनी है। मैंने कहा भाई 3 महीने का कोर्स कर लीजिए। मेरे पास स्टेज एक्टर आते हैं जो 10-10 साल से नाटक कर रहे हैं, थिएटर, तो सिनेमा में आना चाहते हैं, टेलीविजन में आना चाहते हैं, तो उनको भी बोला मैं कहा साहब 3 महीने का कोर्स कर लीजिए पहले, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट आपको मिलेंगे, मान लीजिए आप एक बैच में हैं, इस बैच के अंदर 60 लोग हैं, ये 60 लोग भी तो इंडस्ट्री में जा रहे हैं जी। तो पहला कांटेक्ट तो आपको अपने क्लासरूम में मिल गया, फिर 50-60 लोग आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, वो आपके कांटेक्ट हो गए, तो यू आर नोन टू द इंडस्ट्री इन जस्ट नो टाइम। काम मिलना शुरू हो जाता है। जी। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज पीपल work very hard, they go to certain level, but still, you know, what happens is their hard work, their efforts do not get that recognition, as I mentioned earlier. And in spite of having that talent, like somebody who creates digital music and they reach till the Grammys from Uttarakhand and they do not get a platform, what do you have to suggest for them? Now, see, the most important thing today is that how talented you may be, it doesn't matter unless and until you have a marketing techniques with you. So you have to be also a marketing man of your own. Even an actor has to be a marketing man for himself. You should know how to market yourself or market your capabilities. Very important. For that, you need to have a right addresses, right people. You have to have a right resources, and you need to have a lot of stamina to actually meet and greet people. अब आपने मान लीजिए आपने ऑस्कर ले आए और उस ऑस्कर लाने के बाद आप घर बैठे हैं, किसी को क्या लेना देना, किसी को नहीं। तो द इंडस्ट्री इज मूविंग वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। एक चैनल को 24 घंटे प्रोग्राम बनाना है, वो दीवाना हुआ है। वो अगर आप उसके पास रोज जा रहे हैं, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद आ जाओ, कहेगा यार खड़े हो जाए, एक यहाँ पे रोल की जरूरत है, और आपने परस्यू नहीं किया। दिस होल इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन योर परसुएशन। how you have to prove to the people that you deserve it. So I always say this is one industry where you first have to deserve and then desire. First deserve that you are punctual, you're regular, you're sincere, you're dedicated, you're a trained person, you have you are pass out from a school, a film or television school, and then now you are working hard, you're meeting people, you're pursuing with them, you are meeting the right people. Not people जो एक टीन का बोर्ड लगाकर बेवकूफ बना रहे हैं कि साहब आइए फिल्में बनाते हैं। और जैसे आपने कहा
कि बच्चे जाते हैं और कहते हैं लाइए साहब 2-4-5 लाख ले आइए। लुटने वाली बात नहीं है। जो एक्चुअल प्रोड्यूसर होगा, एक्चुअल डायरेक्टर होगा, एक्चुअल फिल्म कंपनी होगी, उसको आपके 5-10 हजार की जरूरत नहीं होगी। वो ये तो हो सकता है कि आपको कहे कि भाई पहले 2-4 एपिसोड में आपको देखूंगा, पेमेंट नहीं दूंगा, उसके बाद अगर आप सही होंगे तो मैं आपको पेमेंट दूंगा। पीपल आर नॉट बैड इन दिस इंडस्ट्री, दे वेरी गुड पीपल, दे नेवर कीप एनीबॉडीज मनी, दे ट्राई टू पे, पर टेस्ट जरूर लगाते हैं। दिस इज वन इंडस्ट्री वेयर यू हैव टू गो थ्रू अ एसिड टेस्ट। क्योंकि आपको शोहरत, इज्जत, मान, मर्यादा जो इंसान की सबसे बड़ी फितरत है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो आपको झोली में आके मिलती है। आप कल तक कोई नहीं थे, आपको कोई नहीं जानता था, आज आपको सडनली एक सीरियल के अंदर लीड रोल मिल जाता है और 6 एपिसोड के बाद आपका सड़क पे चलना मुश्किल हो जाता है। कौन सी इंडस्ट्री है जो आपको इतनी शोहरत दे सकती? तो you have to when you're opting for the most important part of human life, so you have to work a lot, for this. इतना आसान नहीं है। देखिए, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते कदम बाधाओं को ठेल। People who have a very strong determination, people with strong determination, they are always the achiever in life. That you have to keep in mind. Definitely. और हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, आ जाएगा, मिल लेंगे, then that doesn't happen. These things never work. जी. And sir, tell us more about the film institute you are running. See, Asian Academy of Film and Television is now, when we started, it was the 4th film school in the country, first in private sector. Today, it is the first and best film schools of the world. Luckily, we have created 7 world records in last 27 years. We are very happy. This institution has been bestowed upon more than 1,000 times from all over the world. Probably I've been lucky enough to climb the stairs of a stage for more than 165 times in foreign countries. Largest number of international awards. Really amazing. So students are doing very well. They have attained success in every field. They have understood what we've been actually teaching them in the institution. There is one theory part, there is one practical part, there is one humanity, what is very important for this industry. They must learn that. And then the whole filmmaking is a group exercise. It's a joint venture. So you have to learn in togetherness. You should know how to compromise. You have to know how to hold your emotions to be a part of this industry, because you can get hurt very fast because everyone is trying to be a star. Everyone is trying to be on the top. So there is a lot of competition, and it's a survival of the fittest. If you can fight with the circumstances, if you know how to tackle, if you are pleasing in nature, if you are down to earth, you're bound to be successful in this beautiful industry. And there is no industry which is better than film industry. And it's a very old proverb that show business is the best business. Best business. And it goes on and on and on. It never stops. What we are doing right now is also a show business. Yes, I'm very happy for you. I mean, you called me up and I couldn't say no to you. Thank you so much for accepting it. And definitely we will take it further for other episodes, we've discussed film and television. Next, I guess in the next episode, we can discuss about the media. And like as you said, it's a very long and a vast topic. We can have it in episodes, because we have tomorrow onwards, we will be starting on with the current educational scenario in schools. Wonderful. And the topic will be advantages and disadvantages of online education for children in school. So I think
in the last, probably I would love to say that anyone and everyone who's keen in getting into films, television, media, art, and culture, it's very important to get into a proper education and training, because without education and training, nobody will today entertain you. People would love to have trained and people who have done bit of training in film schools or television schools, I mean, and so that you know the subject, you know how to proceed further, you know how to tackle your system and your industry. You should know how to behave with the people, because this whole industry is still very primitive in its thinking when it comes to sanskar, because it's very important in this industry to respect your elders and love your juniors. And this whole industry is worked on that. There is not a very Saab Babu kind of a pattern. Everyone is artist, everyone is close to God, everyone is God-fearing, everyone is emotional, and you should know how to live in this kind of a circle. Then only you will be able to achieve success much faster. And for all that, you need to be groomed, you need to be trained in a right environment. And when you are in a film school, probably the film schools which cost 200, 300 crore of rupees investments, you are learning at 100 rupees an hour, which is nothing. Because like, for example, AAFT is the most cost-effective film school in the world, with best of the facilities you can't even dream of. They are available and you're paying nothing for it. But the only thing is that you have to spend some kind of a time to know what industry is all about. I think with all these words, let me extend my heartiest thanks to you, Reena Tyagiji, for your wonderful time. And thank you so much, sir. I would thank you for sparing such precious time of yours for this talk show. Definitely, we'll continue for the next episode on next Sunday. I think we can discuss the time later on and we'll broadcast it. Thank you. Thank you. Thank you so much.